62 years since they have been reliving each bloody moment of the riots that tore them apart, which had forced them to leave Pakistan and flee for their lives. This is a clear violation of human rights. In the last 62 years, these scheduled caste Hindus have suffered greatly. Deshraj, Biro Devi, Gyan Chand, Kishori Lal, Amar Singh, and many others. Are they just faces and names whose voices are going to fall on deaf ears? What is their fault if they are demanding and seeking residency and citizenship? They are, after all, Indians. Today, they are crying themselves hoarse to be called Indians and subjects of Jammu and Kashmir. Many leaders came to power and went, but the denial to grant them their basic fundamental right remained the same. This is a clear violation of human rights. In the last 62 years, these scheduled caste Hindus have suffered greatly. Who will take the responsibility for this? This group of 2.5 lakh people have very basic demands, most of them unheard, unfulfilled, ignored. हमने लीगल स्टेटस भी देखना है क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख में आर्टिकल 370 है, उसमें वो जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है उसी को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और ये बेनिफिशरीज जो हैं कुछ गवर्नमेंट में भी आप समझते हैं हमारी जो जम्मू कश्मीर रियासत है ये कोलिशन सरकार के थ्रू यहाँ पे चल रही तो पॉलिटिकली कोई ऐसा डिसीजन दे पाएँ जिसमें सब लोगों को जिसमें रीजनल एस्पिरेशंस भी लोगों की है सब रीजन्स भी बीच में हैं तो इतनी पार्टीज़ को सब इकट्ठा करना ये बड़ा सा आसान काम नहीं। एक्चुअल में जो स्टेट सब्जेक्ट का इशू है जो महाराजा के टाइम का है उसमें भी इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 और उसमें लास्ट में इन्होंने ये भी दिया है कि स्टेट सब्जेक्ट कोई ऐसी जगह ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इनको ना मिले। अगर ये लोग रियायतनामे पे या इजाज़तनामे पे किसी को दे देते हैं तो वेस्ट पाकिस्तानियों का भी हक बनता है और उसमें क्लियर कट लिखा है कि 10 साल जो आदमी एक जगह पे रहता है वो वहाँ का नागरिक होगा। लेकिन ये तो पिछले 60 सालों से है लेकिन इनका राइट बनता है। लेकिन एक ऐसी सिस्टम है, ऐसा एक पॉलिटिकल इशू बनाया इन्होंने जिसकी वजह से इन लोगों को आज तक वली का बकरा बनाया गया है, इनको यहाँ का जो नागरिक अधिकार है वो नहीं मिल रहा। Finally, on November 2007, Wadhwa Committee report was submitted to the state government, stating the demands of the refugees, particularly the West Pakistan refugees, which clearly states, West Pakistan refugees are very much citizens of India and there is no separate citizenship of the state. As most of displaced persons of 1947 from West Pakistan belong to SC category, government may issue separate circular instructions for granting to them reserve category certificates applicable only for recruitment to posts under the central government or other state governments and paramilitary forces. This is a justified demand government may consider. The reaction and decision on the recommendations of the report is still pending, leaving the question hanging in the air. When will a decision be taken on the recommendations? When will these poor souls get justice? When all over the country, reservations have already been implemented in all job sectors. How come these economically and socially underprivileged people are still awaiting justice? हम इसको कोशिश करें कि इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर हम स्टेट सब्जेक्ट ना दे पाएँ तो इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम दे पाएँ भी वाकई वो यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं 62 वर्षों के बाद और फिर भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर इनको देना है तो पीआरएस दीजिए, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो हमारा है पीआरसी, उसके तहत इनको लाया जाए और सारे के सारे अधिकार जो है वो उनको दिया जाए।
इन लोगों को आज तक हमारी नागरिकता भी प्रदान नहीं की गई। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो सकता। असल में जो जहाँ जम्मू कश्मीर का सिस्टम है, यहाँ तो स्टेट सब्जेक्ट के बिना किसी को नौकरी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ जो रिफ्यूजी इशू की बात है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि इनको तब तक हम स्टेट सब्जेक्ट नहीं दे सकते जब तक यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी ना बने। तो टाइम भी हम इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में मिलता है। उससे क्या होगा कि यहाँ हमें जहाँ हमारे बच्चों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियाँ वगैरह हैं वो मिल जाएगी। बाकी डोमिसाइल से कोई और फ़ायदा होने वाला नहीं है। Giving them access to the armed forces and admissions in the colleges on the basis of the domicile certificates is indeed a ray of hope, but too much of water has passed under the bridge. Too much of bitterness has made their resolve to fight stronger. The countdown has begun to see the end of this serpentine road of struggle, to get an impartial hearing, and to ensure that justice is albeit delayed but not denied. On one hand, the rest of the refugees were compensated for their losses. West Pakistan refugees are still reeling under years of pain, neglect and poverty, still waiting to call Jammu and Kashmir their home, still waiting to be called state subjects. West Pakistan refugee living a life of a slave in a free country.